Oh, very warm good morning, children. Today I'm going to re-explain the chapter, the skeletal system. Mm, this chapter is little bit bigger because I've already explained it. I'm not going to go for very detailed explanation. In this lesson, children, you will learn about the importance of the skeletal system. What importance is skeletal system in our body? We will come to know the skull, the backbone, and the rib cage. These are all in the skeletal system. The function of each will be explained to you in short. Okay, so here you can see the picture of the human skeletal system. The framework of the bones in our body is called the skeletal system. Now, what is skeleton? Skeleton is actually the framework. If we would not have had skeleton in our body, only this skin and muscles will not be able to hold the body upright. So the functions of the skeleton is to give form and shape and support to our body. You cannot stand without the skeleton system. Then next is it protects the inner organ. If you fall down, you get a jerk, these skeletons are protecting you. An adult has got 206 bones in his or her body. What all does the human skeleton system consist? It consists the skull, the backbone, and the rib cage. And there are two pairs of limbs which are attached to the pair of the girdles. Now, first let us take the skull. Skull is a very important part. Each one of you know. They have got 8 flat bones. All are interlocked. मतलब ये जो स्कल जो आपको दिख रहा है वो अलग 8 बोन्स है. They are being interlocked. एक दूसरे से लॉक हुआ है. Inside the skull is the brain and our face is made of 14 bones which protects the eyes, nose and tongue. The lower jaw can be moved. The upper jaw cannot be moved. ये आपको पता है. नीचे के जॉ को हिला के देखो आप, आपका हिल जाएगा, बट ऊपर के दांत वाले पार्ट को जॉ को आप नहीं हिला पाओगे. Then comes the backbone or the spine. The backbone is also known as the vertebral column. Backbone जो आप हाथ लगा के देखो अपने पीछे, you can see the picture of the backbone also. This backbone is also known as the vertebral column. The backbone can be bent because it is not made of single bone. इसको आप आराम से bend कर सकते हो. अलग अलग bone से वो बने हुए हैं. अगर वो single bone से बना होता तो you cannot bend, twist or turn. These bones are called the vertebra. Now next, come to the next page. Next page is telling us about the rib cage. Children, rib cage. Can you see the rib cage here? Rib cage. The rib cage protects the heart and lungs. अगर rib cage नहीं होता तो हम heart और lungs को protect नहीं कर सकते. It has got 12 long curved bones called ribs. ये जो आपको दिख रहा है ना, they are 12 in number. They are joined to the backbone at the back. These curved rings are joined at the back. और ये जो 12 pairs है, they are called the ribs. These are called the ribs. Most of them are joined to the breast. Breastbone in the front. The 2 pairs of lower ribs which are not attached to the breastbone are called floating ribs. जो नीचे के जो last 2 bones है, they are not attached to the breastbone. Last के 2 bones है, they are not attached. They are called the floating ribs. उनको हम बोलते हैं floating ribs. Next comes the limbs and the arms and legs. Limbs of arms and legs. दिख रहा है आपको ये picture? There are 2 pairs of limbs, a pair of 4 limbs or arms. 2 pair of limbs है हमारे. पहला पैर है arm का and the pair of hind limbs are legs. और पैर के limbs को हम बोलते हैं hind limbs और arm 2 पैर है. One is 4 limbs जो हाथों के limbs को बोलते हैं 4 limbs and for the legs it is said hind limbs. The arms are joined to the vertebral column with the help of shoulder girdles. आर्म्स को अगर हमारा आर्म लटका हुआ नहीं है, वो शोल्डर गर्डल्स के साथ लगा हुआ है. एंड पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, हमारे जो कॉलर बोन्स है अटैच्ड है इन द अपर आर्म. देयर इज अ लॉन्ग ह्यूमरस. इट फिट्स इनटू द शोल्डर गर्डल. द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स. फोर आर्म में 2 बोन्स हैं.
The fingers, palms and wrist are made of up of small bones. जो हाथ के जो palm है, fingers है, wrist है, ये छोटे छोटे bones से बने हुए. The bone in the upper leg is called femur. जो bone upper leg के thighs में जो लगे हुए हैं, this is called femur. These bones are called femur. जो thigh bones, thigh को हाथ लगा के देखो, यहाँ पे जो bone आपको touch हो रहा है, that is the femur. ओके, इट बेयर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी. हमारा थाइज ही हमारे पूरे बॉडी का वेट होल्ड करता है. इट फिट्स इनटू अ गर्डल. वो जाके एक गर्डल में फिक्स हो जाता है. इफ इट वुडंट हैव बीन फिक्स्ड, वी कुडंट स्टैंड अप, वी कैन नॉट वॉक. देन द लोअर हाफ ऑफ द लेग हैज़ द शिन बोन. जो लोअर लेग है उसके जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द शिन बोन or shin bone and the calf bone. It is called shin bone and the calf bone. At the end of the legs are the feet, और leg के end में feet है, which have a number of small bones. उसके बहुत सारे छोटे छोटे bones है. Now let's come to the joints. The point where two separate bones meet is called a joint. दो point meet होता है, उस that particular point is called the joints. Joint enable us to bend, move. बिना joint के आप और हम move ही नहीं कर सकते थे. Bones are held together by tough tissues called ligaments. सारे bones को एक tough tissue पकड़ के रखता है, हिलाता है, डुलाता है. That is the ligaments. There are various kinds of joints in our body. Joints in our fingers, toes, joints in our neck and head, joints in our shoulders, etc. Different joint help us in different types of movement. हर एक अलग जो दो बोन को जोड़ता है. आप पॉइंट्स पकड़ पकड़ के देखना कौन कौन से दो बॉइंट्स को जॉइंट्स को तोड़ता है. इफ़ यू वुड हैव बीन इन क्लास, आई वुड हैव शोन यू द प्रैक्टिकल, calling a child in front and showing all the joints. But here it is not possible. Now hinge joint is present in knee. Hinge joint कहाँ present है? Be very careful. These are the things which you should by heart. Hinge joint is present in knees, elbows and fingers. It is like the hinge of a door. Door की जो hinge होती है ना, पकड़ होती है, उसके जैसा लगता है ये hinge joint. Then is the ball and socket joint. In this type of joint, ball and socket joint, in this type of joint, one end of the bone is round like a ball. एक end ball की तरह round होता है, and it fits into the hollow part of the socket. जो हमारे बोन का एक hollow part होता है, उसके अंदर घुसा हुआ होता है. For example, round end of the humerus fits into the cup-like socket and shoulder bone. Also, the thigh fits into the socket of hip bone. The ball and socket joint allows the movement in all direction. Ball and socket joint जो है movement को हर direction में रखता है. फिर आता है gliding joint. In this joint, bones can slide over. It is present in the ankles. It allows side to side motion as well as front back. Ankle को आप हिला के देखो, side भी करके देखो, ऊपर नीचे करके देखो. It moves side and as well as backward and forward. और ऊपर नीचे भी करके देखो, आपका wrist move हो जाता है हर जगह. Then is the pivot joint. The joint between the two vertebrae is a pivot joint. It allows our head to move sideways. The rounded end of one bone twists around in a hole in the other. Okay, this is the pivot joint. Next comes, let's move on to the next page. I'm going a little bit faster, children. Then because the video would be otherwise too long. Then the muscles, ये जो आपको red color के दिख रहे हैं, these are the muscles. The bones cannot move by themselves. They need something to move them. Muscles helps them to move. Muscles are made up of tough elastic tissue. Muscles किससे बने हुए हैं? Tough elastic tissue. Bones move ही नहीं होते अगर इनको muscles के support नहीं मिलते तो. They wouldn't have moved. They cannot move. They are tough elastic tissues. They are attached to the bones by strong fibers called tendons. वो सारे बोन से कैसे अटैच हुए हैं? They are attached by strong fibers. They are called tendons. Strong fibers क्या है? Tendons. Muscles can only pull at the bones. They cannot push. वो muscles जो है pull कर सकते हैं, वो push नहीं कर सकते. Hence, two muscles are required to move the bones in one direction. दो muscles चाहिए हमें bone को एक direction में move करने के लिए. For example, when you raise your arms,
द बाइसेप मसल्स बिकम्स शॉर्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है बाइसेप मसल. अगर आप हाथ रेस कर रहे हो तो बाइसेप मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा हो जाता है, एंड पुल्स अप द आर्म, फिर वो आर्म को पुल करता है. व्हेन यू वांट टू लोअर द आर्म, द ट्राइसेप मसल काम आता है. जब आपको आर्म को, यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स को दिखाया गया है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, सी इन योर बुक. To lift something, bicep muscles get shorter. The hinge joint of the elbow moves to move the arm down again. The tricep muscle shortens and bicep muscles get longer. हर चीज़ के लिए आप देखो, एक बाइसेप और ट्राइसेप मसल कर रहा है, कुछ चीज़ को आप लिफ्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर लिफ्टिंग समथिंग, बाइसेप मसल छोटा हो जाता है. हिंज जॉइंट का क्या होता है, इट इज़ इन द एल्बो एंड इट हेल्प्स टू मूव द एल्बो, और आपके आर्म को मूव करने के लिए ट्राइसेप मसल यूज होता है. सो कौन कौन से मसल्स हो गए, बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स. ओके, देन द हिंज जॉइंट. नाउ काइंड्स ऑफ मसल्स, they are going to tell you the kinds of muscles. The muscles which are under our control are called voluntary muscle. जो भी हमारे कंट्रोल में, they are called voluntary muscle और skeletal muscle. Muscles which are not under our control are called involuntary muscle or smooth muscle. They work automatically. They are found in the food pipe, stomach, intestine. Involuntary muscle. वॉलेंट्री मसल कौन कौन से, जैसे हाथ के मसल्स जो हैं, जो हम कह रहे हैं उठाओ तो वो उठा रहा है, नीचे डालो तो नीचे डाल रहा है ना. हम जो सोचते हैं वही होता है, ये चीज़ उठाना है तो हमने उठा लिया, इसको नीचे रखना है तो हमने रख दिया. दैट इज़ वॉलेंट्री मसल. बट इनवॉलेंट्री मसल जो हमारी नहीं सुनता है, वो ऑटोमेटिकली चलता है. दे आर फाउंड, वेयर आर दे फाउंड? दे आर फाउंड इन द फूड पाइप. We don't tell the food pipe to take the food down, it takes it automatically. We don't tell the stomach to do the grinding or churning, it does everything. We don't tell the intestine to do all its work, it is done automatically. So they are called involuntary muscles or smooth muscles. The muscles of the heart are called cardiac muscles. जो muscles heart में है उसे हम cardiac muscles बोलते हैं. They are involuntary muscles. हाउ डू मसल्स वर्क? अब मसल्स कैसे, अब आपको यहाँ पे 3 तरह के मसल्स दे रखे, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स. ये देख लेना आप क्लियर ध्यान से. हाउ डू मसल्स मूव? मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और शॉर्टनिंग. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम थिकर एंड शॉर्टर. दे प्रोड्यूस मूवमेंट्स in the body by pulling on bones. Due to these movements we are able to walk, jump, carry things etc. Muscles के कारण ही हमें सारी movements मिलती है. We are able to move. There are about 640 muscles in our body together. They make 40% of our weight. हमारे muscles, हमारी जो body की weight है उसमें 40% muscles का weight होता है. Now looking after our bones and muscles, to keep the bones strong we should take food rich in calcium such as banana, milk. ये सब आपको खाना चाहिए बच्चों. You need to eat all these. We must maintain good posture and you should sit straight. पढ़ाई करो, कुछ भी करो, your posture should be smart so that your backbone doesn't get tilted or turned or bent. We must also do yoga asana. See the picture. These activities help in keeping our bones and muscles in a good shape. इन चीज़ों से हमारे बोन्स और मसल्स अच्छे शेप में रहते हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. आई हैव डन लिटिल बिट फास्टर बट स्टिल 14 minutes वीडियो. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.